Hello guys, Assalamualaikum. My name is Farzan Tariq. I am the youngest of the Ajeeb brothers, and वैसे तो I do a lot of things, but to classify myself into one thing, I would say I do projection mapping, and I do it pretty well. I would say so. और ये सारा सामान मेरे लिए आ रहा है. Afan just. Bria, can you turn on that projector? मैं आप लोगों को थोड़ा फार करवाऊंगा, थोड़ा इंतजार करवाऊंगा. All right, yeah. My idea, अब ओए फान, कहाँ? फान. इसको अभी रिमूव करोगे 5 मिनट के लिए. साइड पे कर दो इसको. So I can show some of my work and then we can move onwards. इसको गिरा दो ज़मीन में गिरा दो. सही. So the idea for today is to transforming spaces with projection mapping. लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं what is projection mapping? If I had to define it for you, I would say it's basically a technique that uses projectors to display visuals of any sort onto any surface, whether a regular surface or an irregular surface, could be anything. I mean, the whole idea is to create immersive and dynamic displays. सॉरी मेरा गला बहुत ख़राब हो गया है लाहौर में, पता नहीं, मुझे लग रहा है स्मोक की वजह से हुआ है, इवन दो है भी नहीं यहाँ. Alright, so what the use of projection mapping is applied to improve visual storytelling, creating interactive experiences within spaces, etc., all of that. आसान अल्फाजों में कोई मुझसे पूछता है कभी भी तो मैं बोलता हूँ यार तुझे कोई भी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ सामने नजर आ रही है, वो बोलता है हाँ, मैं बोलता हूँ उसमें I can play visuals on it, right? That is what very much makes sense to people. If I was to show some of my thoda purana काम, I'll give you a little preview of what I do. I did this at a private beach party. I mean, I have a lot of content to show, but आधा में record भी नहीं करता क्योंकि private clients होते हैं, etc. They don't want stuff to be recorded, etc. This was at a beach party, कराची में था. Thank you. सही है. But ये कि I just show some of my other work. These tall, polygonal, three-dimensional sculptures that were hanging from the ceiling, where we could do some really cool projection mapping. These tall, polygonal, three-dimensional sculptures that were for a private rave party that happened in Karachi. कोरंगी में हमें कोरंगी एक इलाका है जहाँ सारे warehouses और factories वगैरह हैं. मुझे और अफान को they handed us this warehouse and they asked us to curate the whole space, right? और 20 फुट की इसकी छत है, etc. all of that. So we decided to curate this whole space. The whole idea was to do projection mapping, but on unconventional surfaces, etc. all of that. So that is how we did that. This is something मैं भी recently हुंजा स्कर्दू गया हुआ था और I decided to carry my projector with me to Hunza and Skardu, and this is some random stuff that I did in Hunza and Skardu. And I'll tell you that mapping on humans is no easy task क्योंकि वो हमेशा हिल रहे होते हैं, but this came out very cool. Anyways, this is some of my work, but what we'll do even better today is that we'll do some live projection mapping, and I'll try to show you a tutorial of how I do it and how it comes out in real life. So I'll just move on to that. ये कि ख्वारी बहुत है, but
मैं थोड़ा यहाँ प्यार से आप लोग साथ बैठ रहा हूँ। ये मुझे चाहिए, क्या बात है आपकी। और आप ये लगाएंगी सना, मैं ब्राउज़र में यार माइक का स्टैंड अगर मिल जाएगा तो बेहतरीन है। मेरा काम होने और ना होने में बस एक चीज़ का फ़र्क है, बिजली चली जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये पाकिस्तान में ना काफ़ी ऑफ सीन है। लैपटॉप पे चार्जर लगाए? हाँ लग गया, सेट है, सॉर्टेड है, सही है। फन इसको नीचे कर, ज़मीन पर रख दो प्रोजेक्टर को, पता है इसको फिट कर दो आप। थैंक यू। गूगल मीट नहीं चल रहा यार मेरा इंटरनेट। हाँ चल रहा। चल रहा है आपके पास? नहीं चल रहा? चल रहा है, ट्राई करो। मसला यहाँ बेसमेंट में इंटरनेट नहीं चलता एंड आई एम ट्राइंग टू गूगल मीट टू फरहान्स लैपटॉप सो आई कैन शो यू अ लाइव ट्यूटोरियल व्हाइल आई डू द एक्चुअल मैपिंग। वरना तो आप लोग को एक्चुअल मैपिंग नजर आएगी बट देयर वोंट बी अ ट्यूटोरियल ऑफ हाउ टू एक्चुअली डू इट। ओके सही। दो आउटपुट्स में इशू कर रहा है काफ़ी। एनीवेज आई जस्ट स्टार्ट राइट अवे। Anyways, the whole idea is to place any surface, could be anything. आप इंसान को भी लाके खड़ा कर दो, you could map onto that, right? The way I started is I do something like I turn the projector on, I put any surfaces, obviously or whatever surface the client gives me, I test that out. अब मैं देखता हूँ मेरे प्रोजेक्टर कितनी स्क्रीन कवर कर रहा है, यहाँ भी मुझे आइडिया हो जाता है कि यार कितनी जगह कवर कर रहा है। And then I start basically drawing on it. शायद उस साइड वाले लोग नहीं देख पा रहे होंगे गद्दे की इस तरफ, तो अगर आप लोग यहाँ आना चाहें तो आ जाएं। Alrighty. I mean like this is ये मसला नहीं। Or if you guys want to come and look at my laptop screen, then do that by all means. Also, मैं चाहूँगा कि कोई भी इंसान कहाँ फिनान आप कहाँ, आप यार जाके उधर बैठ गए ज़मीन पे, पता है बस। हाँ ये आप मेरे आज के लाइव मॉडल हो, सही है। द सॉफ्टवेयर इज प्रीटी सिंपल, जो लोग मेरे पीछे हैं वो देख सकते हैं। Projection mapping can be done by a lot of softwares, one's called HeavyM, which I use. There's heavy software like MadMapper or Touch Designer. Touch Designer is a software जो दुनिया के let's just say the best artists use, but पाकिस्तान में आपके लैपटॉप से वो सपोर्ट ही नहीं कर सकते। उसके लिए आपको PC ही 10-15 लाख का बनाना है हर जगह कैरी अराउंड करने, which is not feasible at all. Let's start off with Sinan's, और आप स्टेबल बैठ जाओ, बस ऐसे ही बैठे रहो, अब हिलना नहीं। Okay. हम सिनान के कंधे से स्टार्ट करते हैं, राइट कंधे से, then let's move around. सिनान आप बहुत प्यारे लग रहे हो आज, पता है। Sinan is by the way the owner of Dot, and we are very grateful for him for having us here. मैं काफ़ी जल्दी कर रहा हूँ और ये काफ़ी रफ होने वाला है। यहाँ से सिनान फ्रेम से बाहर निकल रहा है, बट इट्स ओके।
There we go. अब मैं इसको कर लेता हूँ mask. So mask कर लेता हूँ. Then what if we put some flame on Sinan? It could work like that, or you know, what if we create a portal within Sinan? It could work like that. I mean, so there's a lot that you can obviously play around with it. पाकिस्तान में unfortunately एक ऑफ सीन ये है कि the main client market that comes with projection mapping is unfortunately or fortunately, I mean, for me it does bring in the money and the financial aspect, but it's just concert and raves. So you know, दुनिया भर में obviously commercially हो रहा है, but हमारे यहाँ भी हम उस आलम पे 30 साल पीछे चल रहे हैं कि you know लोगों को पता ही नहीं है कि किन किन कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है. I've worked with a few commercial clients, but then वही बात है कि no one's ready to pay for the projector or for the artist fees, etc. All of that. But in raves and concerts, this very much works. And yeah, that's pretty much it. That is how I do this. It's relatively simple, but yeah, that's it. If anyone has any questions, kuch bhi, let me know. So were these animations pre-made? Yeah. So he asked, were these animations pre-made? What I do with most animations is कि curated stuff होता है हमारा usually. So I'll give you an example. आधी animations या तो हम खुद बनाते हैं. So I sit down with the team. I sit down with Wali. I sit down with Ajeeb. So recently we did a concert in Islamabad, and it was called Container City. तो अब हमने हर artist के लिए अच्छा ये हुआ है. मैं duplicate कर लूँगा. I'll show you guys something. हो गया. अब आप आ जाओ. So what I do is sometimes I use AI to create visuals, Premiere, After Effects, and then Wali does his 3D magic on Blender and etc. All of those. I'll give you an example. अगर ये कोई गद्दे हटा दे. So like this was, अब जैसे मुझे आइडिया था कि यार एक 50 फुट बाय 20 फुट की दीवार थी. तो उसका मैं साइज लेके गया. प्रीमियर पे मैंने बेसिक वो लगाया, मैंने वली को दिया, वली ने एडिट करके दिया. So most visuals that we create with that I create with the team are usually curated. I'll give an example. I'll show you something. This is I worked with a client that was doing a theater play on a Hindu story, रामायण की कहानी पे, and he wanted me to create these visuals और वो पैसे बहुत कम दे रहा था. और बोलते कि यार मुझे ये सारी चीज़ें बना के दे दो कि समंदर की लहरें आ रही हैं, ये हो रहा है, बादशाह का घर है, कमरा है. फॉर दिस आई जस्ट पेड $20 टू मिड जर्नी, एंड देन मैंने ये सारे बैठ के वीडियोस निकाले. ये आस्क मी कि यार पीछे पहाड़ है, परिंदे उड़ते हुए जा रहे हैं, एक्सेट्रा. सो समटाइम्स आई यूज AI, समटाइम्स आई यूज प्रीमियर. ऑब्वियसली बेसिक विजुअल्स के लिए आई यूज प्रीमियर एक्सेट्रा, आफ्टर इफेक्ट्स, एंड देन बाकी वली हेल्प्स मी विद 3D स्टफ एक्सेट्रा. I mean, and this is like just random stuff that I have. Or visuals अच्छे खासे. The best part is I buy Envato every month, right? And I pay Envato $20 to $30. और इस पे दुनिया के लाखों करोड़ों visuals हैं. I mean, there's something I did for a client that wanted pop artist की theme. मैंने कहा बैठी बैठी मैं visuals उठाता हूँ, फिर मैं इतनी मेहनत उस client के लिए करता हूँ जो पैसे उतने देता है. So that is something that differs from client to client. So how do you price these in terms of animations and the technicalities involved? Yeah, so I price them on the basis of कि projectors कितने लग रहे हैं. और पाकिस्तान में, I mean, ये जो projectors आप देख रहे हो, these are normal classroom projectors, right? But commercially, these are like 3,000 to 4,000 lumens. Lumens के हिसाब से projectors measure होते हैं. Commercial आते हैं 10,000, 12,000, 15,000. अब 20,000 lumen वाले के अगर मैं आपको रेट बताऊँ, एक दिन का रेंट पता है 10 लाख रुपए. 10 लाख रुपए रेंट है. अब मैं वो कहीं से रेंट करूंगा 10 लाख, और मैं उसके ऊपर कुछ चार्ज करूंगा अपनी आर्टिस्ट फीस, अपनी एनिमेशन फीस, तो कोई क्लाइंट देने को तैयार नहीं है, राइट? आई मीन रिसेंटली PSL कॉन्टैक्टेड मी कि हमें बादशाही मॉस्क पे करना है. मैंने उनको 75 लाख की कोटेशन बना के दी थी. 75 लाख में उनका पूरा वैसे ही सेटअप हो रहा था यार. तो इसलिए इतना वायबल है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में प्रोजेक्टर आई ही नहीं है. सिर्फ 2-3 कंपनियां लेके बैठी हैं जिन्होंने करोड़ों 3-4 करोड़ लगा के बैठे हुए हैं. तो आई यूजुअली प्राइस देम ऑन द बेसिस ऑफ मेरे प्रोजेक्टर्स कितने लग रहे हैं. अगर छोटा प्रोजेक्ट है, आई नो कि मेरे पास अपने 2 से 3 प्रोजेक्टर्स हैं, आई कैन इजीली डू इट. प्रोजेक्टर्स का रेंट काउंट होता है, मेरी आर्टिस्ट फीस काउंट होती है, एनिमेशन की फीस काउंट होती है, एंड देन उस हिसाब से आई प्राइस माय प्रोजेक्ट्स. ये सीन होता है.
I think so, yeah. Thank you, everyone.